अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकबाल एंड रूमी सर्कल। हल्का रूमी इकबाल में खुश आमदेद। मिले हैं हमको आबा से जो मोती इल्म हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएँ इनको अगली नस्लों तक। The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our predecessors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. In this session, brief session, I want to reflect upon the way Allama-Iqbal has used Naat in his poetry in a very unique way. Current tradition that we are familiar with is that people, whenever they publish something, and they start their majmua, their collection of poetry, with hamd and naat. And if you look at Iqbal's collections of published poetry work, you don't see that kind of a system or punctuality on making sure that you label the first verse, that your first poem that you publish as hamd or naat. So this looked a little bit unusual to people, but once I more reflect on it and looked at his poetry throughout, I realized that Iqbal has used hamd and naat throughout his poems and poetry without basically labeling it as such. And this particular hamd and naat kind of feeling permeates throughout his poetry, and this is beautiful and of course unique to Iqbal himself. Today I will basically pick just few lines, just 2 lines from the Nazm Zawq of Shawq that has 30 verses. I'll use the verse 19th and 22nd basically to illustrate the point that I'm making. Iqbal says, Lauh bhi tu, kalam bhi tu, तेरा वजूद अलकताब, गंबद आबगीना रंग तेरे मोहित में हिबाब, और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब. बेसिकली इकबाल ये कह रहे हैं कि आप ही हैं लौह जिसके ऊपर तकदीर अल्लाह सुब्हानहू तआला लिखता है, और आप ही हैं कलम जो उसके ऊपर तकदीर लिखी जा रही. आप ही तकदीर हैं और आप ही तकदीर के कातिब हैं, लिखने वाले हैं. और आपका वजूद क्या है? अल किताब, द डिवाइन बुक दैट अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज सेंट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी फॉर देयर गाइडेंस. तो यू आर बेसिकली a message from Allah subhanahu wa ta'ala, a message that is basically so specific, so beautiful. आप ही हैं कि जो आप कलम भी हैं, किताब भी हैं, और आप ही पैगाम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का. और गुंबद आबगीना रंग तेरे मोहित में हिबाब, ये जो आसमान हमें नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये आपकी हस्ती के अंदर तो ये इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है. आप इतना बड़ा समुंदर हैं और ये उसके सामने एक बुलबुला है कि आप माशाअल्लाह रहमतुल लिल आलमीन हैं. आपके लिए कायनात को तम बनाया गया है. तो ये जो आसमान जो हमें नज़र आ रहा है हमारी दुनिया के ऊपर, ये तो आपके वजूद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है. इससे बढ़ के नात का शेर क्या हो सकता है. और फिर दूसरा देखें, और ये जो दूसरा शेर मैंने सेलेक्ट किया 22 नंबर, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम. जब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हम कलाम होता हूँ नमाज में और उसको देखना चाहता हूँ, उसके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अगर आपकी मोहब्बत उस मेरी नमाज की इमामत ना कर रही, अगर मैं आपको अपना उस वक्त इमाम समझ कर ना कर रहा हूँ ये गुफ्तगू, तो फिर मेरा क़याम भी हिजाब, जो मैं खड़ा होकर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात कर रहा होता हूँ उसमें हिजाब है, पर्दा है, मैं फ़ेस टू फेस नहीं हो रहा. और मेरा सुजूद भी हिजाब, मैं जब सजदे में जाता हूँ तब भी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नहीं जा सकता जब तक आपकी मोहब्बत जो है वो मेरी इमामत ना कर रही हो. In other words, when he says that when I stand for prayer and I want to be face to face with Allah subhanahu wa ta'ala, it's your love that I have for you that is actually leading my prayer. If that was not the case, then there would be a curtain between me and Allah subhanahu wa ta'ala.
that curtain is removed basically because your love is leading my prayer. It's because of your love that I have in my heart that I am able to clear all the obstacles along the way and can have an audience with Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the way Iqbal is writing Naat in the middle of long poems in which he basically builds the case for humanity, for our being and for the nature, and then brings in these things along the line. One really has to look carefully. इकबाल के कलाम के अंदर जो खूबसूरती है ये इसी की खासियत है. अल्लाह इसकी दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लामा इकबाल के दर्जात को बुलंद फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए, और हमें उसके इन जो शायराना कलाम जो वो छोड़ के गए हमारे लिए, उससे मुस्तफ़ीज़ होने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फरमाए. May we be able to learn from Iqbal and try to see the message within his poetry so that we can guide ourselves properly to live a life that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to live. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. Until we meet again, Allah Hafiz.